हमने कल के टूर के लिए एक्चुअली ना किसी एजेंट से बुकिंग करा ना कहीं ऑनलाइन से बुकिंग करा, बट बाहर जाके एक्सप्लोर करा। तो हमको जो रेट्स मिले हैं वो अभी तक सबसे अच्छे, मतलब जो बेस्ट प्राइस मिला उससे हाफ प्राइस में मिले। बट वो वर्थ है कि नहीं है वो कल जाके हमको पता पड़ेगा फुकेट सिटी टूर का। तो उसका रिव्यू हम आपको कल ही दे पाएंगे। चलिए बाय। और अभी हम डे 2 फुकेट में बैठे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। थोड़ी ब्रेकफास्ट पे चर्चा हो जाए। इवू क्या खा रहे हो आप? डोनट्स खा रहे हो? मस्त मस्त है। And some live here, some go back. So we have Chinese people in our country. And around 150 years ago, the big group of Chinese come to Phuket to do mining over here. हाय एवरीवन, अभी हम फुकेट में ओल्ड फुकेट टाउन में हैं और आप यहाँ देखेंगे सारा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो बोलते हैं कि दिस इज़ थाई प्लस चाइनीज़ प्लस पोर्टुगीज, इन सब का मिक्स है यहाँ पे। So they need the full one like this to make a...
ट्रिप शुरू किया था 10:30-11 बजे के करीब और अभी 4:30 बज गए हैं और हमने काफ़ी सारी जगह कवर कर ली है। हमने कैशू की फैक्ट्री देखी, हनी की फैक्ट्री देखी। ये आप पीछे देख रहे हैं वट चलोंग है, मंदिर है, ये बुद्धा टेम्पल है। अब हम बिग बुद्धा टेम्पल जा रहे हैं जो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। बुद्धा टेम्पल गए थे, उसके बाद हम बुद्धा टेम्पल से आएंगे और हम जाएंगे घूमने के लिए। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, हम बीच पे जाने वाले हैं। आज हमारा प्लान है कि हम बीच पे ही जाएंगे। हमारा बीच हुआ ही नहीं है, हम फुकेट आए, हम बीच पे नहीं गए अभी तक। हम सबसे पहले बीच पे जाएंगे, हम जब वहाँ पे खूब सारा खेलेंगे। हेलो एवरीवन, ये है बिग बुद्धा का व्यू। और आप पूछेंगे बुद्धा कहाँ है, सो ये रहे। अंकिता ने बेचारी ने शिवांग को ऊपर उठा कर लाया, कैमरा भी उठा के लाया, गोप्रो भी उठा के लाया, पानी की बोतल सब जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई उसके सर पे। मेरे कंधों पे है भी। हम अभी आए हैं बांग्ला स्ट्रीट पर। अभी हमने स्टार्ट किया है और सामने एक बहुत ही अच्छा होटल है। इस होटल का नाम है टाइगर होटल। और ये है बांग्ला स्ट्रीट का टिपिकल सी फूड। आप ये स्ट्रीट दे सकते हैं। हाय, अभी मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली दीवाना पटोंग और रमाड़ा दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में। ये दोनों एक ही ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है। देखेंगे अगर आप अंदर जाएंगे देखेंगे तो काफ़ी लेविश एमिनिटीज सब कुछ दिया हुआ है दोनों प्रॉपर्टीज़ में। तो आज हमारा डे 2 था फुकेट में। हम गए थे, सिटी टूर किया था, बिग बुद्धा देखा था, टेम्पल्स देखे थे, कैशू नट फैक्ट्री देखा था, हनी फैक्ट्री देखा और ऐसे ही साइट सीइंग करी। रात को हम इवनिंग में बांग्ला स्ट्रीट जाके आए। जो जैसा बोला जाता है बांग्ला स्ट्रीट के बारे में बिल्कुल वैसा ही है। और इंडियन फूड का कोई टेंशन नहीं है। इंडियन फूड आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। रेट्स थोड़े रहेंगे ज़्यादा, ऑब्वियसली करेंसी है भी ऊपर हमसे। इस तरह हमारा डे 2 ख़त्म हुआ। कल हमारा टूर है 60 आइलैंड।
उसका अपडेट हम आपको कल सुबह सुबह देंगे, क्योंकि हमको कल सुबह बहुत जल्दी उठना। चलिए, ओके बाय, गुड नाइट।